हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश व्यापम गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 18 अप्रैल 2026 के क्वेश्चंस। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में इन इंग्लिश विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। First question is the Atal Arogya Lab scheme recently launched in Sukma aims to provide how many types of diagnostic tests free of cost? तो इसका right answer option C 133 types. In explanation, the Digital First Healthcare Initiative provides 133 type of medical test at no cost. It is unique because it sends reports directly to the patient mobile phone via WhatsApp or SMS. Next question है which former Supreme Court judge has been appointed as the chairperson of the committee to draft the Uniform Civil Code UCC in छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई. In explanation, following the cabinet decision on April 15-16, 2026, Justice Ranjana Prakash Desai, who also headed the Uttarakhand UCC panel, was chosen to lead the Chhattisgarh committee. Next question है in which district did a major industrial accident occurs in mid-April 2026 leading to an FIR against the management of a private power plant? तो इसका right answer option C Sakti. In explanation, a boiler explosion at a power plant in Sakti district resulted in 20 deaths leading to high-level investigation and legal action against industrial heads. Next question है to promote the Orange Revolution in the Sarguja division, the state government has announced a subsidy of what percentage for farmers setting up citrus fruit orchards? So इसका right answer option C 75%. In explanation, as part of the Sankalp budget focus on crop diversification, farmers in Sarguja and Jashpur are being offered a 75% subsidy to pivot from paddy to orange and lime cultivation. Next question है who has been appointed as the new chairperson of the Chhattisgarh State Women Commission State Mahila Ayog as of April 2026? तो इसका right answer option D हेमलता साहू. In explanation, following the recent administrative reshuffle, Hemlata Sahu took charge today, emphasizing the implementation of the 50% registry concession for women and legal aid in the rural belt. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टुडेज़ बुलेट पॉइंट फॉर रिवीजन, जिसमें फर्स्ट है न्यू डिस्ट्रिक्ट फोकस. द स्टेट हैज़ फाइनलाइज्ड द बाउंड्रीज फॉर द प्रपोज्ड खैरागढ़ छुईखदान गंदई KCG स्पेशल जोन फॉर हेरिटेज टूरिज्म. फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर. द गवर्नमेंट टुडे स्टार्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड 2.0 विच नाउ इंक्लूड माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम. फिर नेक्स्ट है पावर सेक्टर. छत्तीसगढ़ पावर स्टेट पावर जनरेशन company CSPDCL achieved a record 92% plant load factor PLF today at its Korba West plant. Next question है the Chhattisgarh government has recently registered an FIR against which high-profile industrialist following a power plant explosion in Shakti district? तो इसका right answer है option C Anil Agrawal. In explanation, on April 16-17, 2026, police in Shakti district registered an FIR against Vedanta Group chairman Anil Agrawal and 9 others for negligence following a fatal boiler explosion at a private power plant. Next question है the E-Safe Her program recently launched to train 1 million women in rural India as cyber sakis will initially focus its implementation in which two states? तो इसका right answer है option B मध्य प्रदेश and Odisha. In explanation, while a national initiative by CDAC and the Reliance Foundation, the E-Safe Her program will start by training cyber sakis in Madhya Pradesh and Odisha with subsequent phases expected to cover neighboring Chhattisgarh. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेट अपॉइंटमेंट्स एंड ऑनर अपडेट, जिसमें फर्स्ट है यूएन कमेटी री इलेक्शन. इंडियन डिप्लोमेट प्रीति सरन वॉज री इलेक्टेड टू द यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स फॉर अ टर्म स्टार्टिंग इन 2027. फिर नेक्स्ट है पद्म विभूषण 2026. रिसिपिएंट इंक्लूड जस्टिस KT थॉमस एंड एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइबल कम्युनिटीज ट्रेडिशनल ढोकरा आर्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ रिसेंटली रिसीव्ड अ डेडिकेटेड कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गदवा कोंडागांव। इन एक्सप्लेनेशन द गदवा कम्युनिटी ऑफ कोंडागांव वर्ल्ड री ओन्ड फॉर ढोकरा बेल metal art received a state funded export hub today. Kondagaon was also recently ranked first nationally among aspiring districts. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर दी लखपति दीदी स्कीम अपडेट फॉर अप्रैल 2026 द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू एलिवेट हाउ मेनी रूरल वुमेन टू एन एनुअल इनकम ऑफ 1 लाख बाई 2027। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 8 लाख। इन एक्सप्लेनेशन द स्टेट गवर्नमेंट टुडे रिव्यूड द लखपति दीदी मिशन एमिंग टू empower 8 lakh women through self-help group SHGS by providing them with the market linkage and low interest loans. Next question, a new solar park with a capacity of 100 megawatt was inaugurated today under the Kusum C scheme. In which district is this park located? तो इसका right answer option B बेमेतारा। In explanation, located in Bemetara, this solar park is part of the state's mission to become a green energy hub. It will primarily supply power to agricultural feeders. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टुडेज़ मोस्ट मस्ट नोन स्निपेस्ट। तो इसमें फर्स्ट है ग्रीन ATM छत्तीसगढ़ फर्स्ट ग्रीन ATM अन्नपूर्ति विच प्रोवाइड फॉर 24/7 राशन टू कार्ड होल्डर्स वाया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वॉज एक्सपेंडेड टू 5 न्यू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टुडे इंक्लूडिंग भिलाई एंड कोरबा। फिर नेक्स्ट एजुकेशन द मतारी जतन योजना वॉज updated today to include free tables for final year nursing students in government colleges to boost rural health care staffing. फिर next है biodiversity. The forest department reported a sighting of the white rammed vulture critically endangered in the Kangir Valley National Park today, marking a success for local conservation efforts. Next question है in April 2026 the Chhattisgarh cabinet approved the formation of a high level drafting committee for the Uniform Civil Code UCC. Who has been appointed as the chairperson of this committee? तो इसका right answer है option B Justice Ranjana Prakash Desai. In explanation, the Chhattisgarh cabinet sitting Article 44 to the Constitution approved a committee led by retired Supreme Court Judge Ranjana Prakash Desai to simplify personal laws. Justify Desai previously chairman the UCC drafting panel in Uttarakhand. Next question under the Sankalp budget 2026-27 which specific mission has been allocated rupees 100 crore to create a roadmap for gap analyst in the state physical growth. तो इसका right answer option A Chhattisgarh infrastructure mission. In explanation, this mission is one of the 6 pillars of the Sankalp budget. Its goal is to identify missing links in road, bridge and power lines to ensure the state reaches its rupees 10 lakh crore GSDP target by 2028. Next question है tribal bodies in Chhattisgarh are opposing the Uniform Civil Code UCC primary citing protection under which schedule of the Indian Constitution? तो इसका right answer option B 5th schedule. In explanation, most of Chhattisgarh's tribal area fall under the 5th schedule which provides special protection to tribal land and culture. Tribal leaders argue that UCC might override the PESA Act 1996 and traditional laws related to marriage, inheritance and succession. Next question है which newly formed district in Chhattisgarh recently inaugurated its first district integrated control and command center DICCC for smart governance on April 17. तो इसका right answer option C मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर MCB. In explanation, to improve administrative efficiency in the remote northern belt, the MCB district launched its DICCC today. It will monitor public service traffic and emergency response using AI integrated cameras.
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द बस्तर 2.0 स्ट्रैटेजी द स्टेट हैज़ आइडेंटिफाइड शेडो एरियाज फॉर स्पेशल मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन. व्हाट इज़ अ शेडो एरिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरियाज विथ नो मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट. इन एक्सप्लेनेशन, शेडो एरियाज आर communication blind spot. The government today approved a plan to install 150 new towers in these zones to ensure that benefit of a scheme like Mehtari Vandan rich resident digitally. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टुडे स्ट्रैटेजिक रिवीजन इंडस्ट्रियल पार्क एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें फर्स्ट है द गवर्नमेंट फाइनलाइज द डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप फॉर 23 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क टुडे. फिर नेक्स्ट है एग्रो प्रोसेसिंग हब प्लान फॉर धमतरी एंड कोंडागांव. फिर नेक्स्ट है मेटल पार्क एक्सपेंशन स्पेसिफिकली फॉर रायगढ़ एंड शक्ति टू यूटिलाइज लोकल स्टील प्रोडक्शन. फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बीइंग डेवलप्ड इन नवा रायपुर अंडर द CMAI मिशन. तो आज हमने डिस्कस किए हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 18 अप्रैल 2026 के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में इन इंग्लिश विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. थैंक यू.